Hello everyone, how are you? Good evening, ma'am. How are you all? Fine, ma'am. So, Evening, ma'am. Fine, ma'am. so I have given you some task, I guess. Yes, ma'am. Yes, please. So it's about UX UI. Anybody like study about what is UX UI? It's about 301 and 302 redirection, ma'am. Okay, sorry. Okay, 301 and 302. Sorry. I'm so sorry. I got confused. So yeah. So you get any understanding what is 301, what is 302? Jessica, you want to share your thoughts? Yeah, ma'am. In 301 status, the spider finds, whenever the spider finds 301 status, it understands that particular website no longer exists. And then the information in the old URL is shifted to the new URL permanently. So in 302 redirection, the information is sent temporarily to the 302, I mean the new URL. So that's the Mm-hmm. difference between 301 and 302 redirection, ma'am. Okay, right. So you understand properly what does this mean, or you want me to you won't have any query or question regarding this? You have any questions or any query regarding the same? मैम जो पेज क्रिएट होता है वो डेवलपर करता है या हमको करना पड़ेगा, मतलब जैसे टेम्पररी और परमानेंट के लिए। Wait a second, Paresh. Let me like complete with Josika first. Josika, do you have any query regarding 301 and 302? No, ma'am. You understand? Yes, ma'am. Okay, good. So yes, Paresh, what you are saying? क्या बोल रहे थे बताओ? ये जो पेज क्रिएट होता है या जो जो भी डोमेन चेंज होता है 301 302 के लिए, ये टेम्पररी होता है और एक परमानेंट होता है। तो ये नहीं, डेवलपर करता है या हम डेवलपर बता ही सकते हैं? करता है, बट द हाँ। थिंग इज इसकी सो एनालिटिक एनालिसिस होती है, लाइक कि किस पेज पे ट्रांसफर होना चाहिए। समटाइम डेवलपर डू दैट बाय जो भी ओनर के अकॉर्डिंग जो भी शिफ्टिंग की जाती है, बट हम भी कभी कभी ये चीज करवाते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ। लेट्स से आपका एक वो है, एक आपका वेबसाइट है या आपका लैंडिंग पेज है, and that website and landing page is already on the ranking of some keywords. Okay, but now what happened, your you want to make some changes and you want to change the URL. Understand? You want to change the URL name or the landing page name. So you want that, you want to change that and create a new page with the different URL name or the landing page URL name. So in that case, if I talk about as an SEO perspective, you have already ranking on the previous URL, right? But यस। you want to create the new one also. यस। Then what happen? Your all efforts gonna be washed out. पुराने सारे एफर्ट्स खराब हो जाएंगे, बिकॉज हम नए यूआरएल पे काम करना पड़ेगा। एसईओ तो पूरा यूआरएल के ऊपर चल रहा है। तो हम्म। उस केस में क्या करते हैं कि हम रीडायरेक्शन लगा देते हैं। बेसिकली गूगल के अकॉर्डिंग तो हमारा पुराने वाले यूआरएल पे गूगल ने रैंकिंग दे दिया, बट जब यूजर उस पर क्लिक करेगा तो वो नए वाले पे चला जाएगा। हाँ। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग होना, ठीक है, किस सिचुएशन में कैसे करना चाहिए, ये सब एसईओ वाला पर्सन जो होता है इन सम केसेस डेवलपर को बताता है। ओके। हम्म, क्योंकि डेवलपर को तो मतलब थोड़ी ना, डेवलपर हैज नो आइडिया अबाउट इट। डेवलपर विल क्रिएट अ न्यू पेज, विल क्रिएट अ डिफरेंट पेज विद डिफरेंट यूआरएल। मोस्ट ऑफ द टाइम डेवलपर डोंट इवन यूज देयर ब्रेन्स in the perspective of user. They understand the code, they ओके। understand the layout, they understand the errors, but they don't understand the user perspective. उस सिचुएशन में रोल आता है डिजिटल मार्केटर्स का, एसईओ एग्जीक्यूटिव्स का, एसईओ स्पेशलिस्ट का। ओके। ओके, यस। एनीवन एल्स?
Anyone else want to ask something? Anyone else who take an understanding what is 301 and 302? Anshuman? Ma'am, I have a doubt. Yes, yes, please ask. Ma'am, in 302 redirection, it says that it does not pass the SEO value to the new URL. So what's the benefit of it using 302 redirection, ma'am? Okay, can you please ask again? 301. 302, ma'am. Okay. So in 302, what you are asking? It does not pass the full SEO value actually to the new URL. When Yes. we change the URL, it does not pass the full SEO. So what's the benefit of using it? So that's my question. Uh, Sometime it's about like for the temporary basis. So it doesn't pass the SEO. So that most of the time people do the 301 only. Okay. Okay. So yes, most of the time people do the 301, they do the permanent redirection. Temporary redirection happen when you are testing something. Okay. Okay, you are Yeah. testing like it will gonna work or not. User will how you user will gonna react on that. So in that case, 302 will work sometime, but most of the time, uh, we have an idea. Okay, we want to redirect this page, so we want the developer to put the 301 only. But we should have an Okay. understanding about the both error code. Okay. Okay. Maybe Okay. Yeah. sometime you are doing SEO for some previous website, and when you are checking, when you are doing audit of that website, you saw that they put 302 in some particular URL. Then you will Mm. see that, and you will ask developer to please remove the 302, or ask the domain owner to can ask them or take a permission, should we remove that 302, and we will put the 301 for that permanent redirection. Okay. Okay, so Okay. Yeah. sometimes we developers or the SEO people do this to just to check if it's working or not, or how user is gonna react on that. It's like first level usage of a website or something. Kind of, yeah. Okay. But most of the Yeah. time, like when I want to redirect something, I want that redirection to be permanent only. Okay. Okay. Anyone else Yeah. want to ask something? Anyone have any query? किसी ने पढ़ा क्या होता है? What is ये 301 302? क्या है इसका मतलब? What is the purpose of using it? Why we are studying this? Although I gave this assignment. Anyone else? No? Nobody? Fine. Then we'll start the topics. Give me a second. Oh God, where it is? Sorry. Give me a second. Give me a second. Something is wrong. Okay. So I'm sharing my screen now. So in previous class, we understand the basics or the overview of technical SEO. Now we'll do technical SEO points one by one in the proper practical way, how to perform the techniques and everything. Before that, I'm asking again if anybody has any query regarding what the assignment I have given to you. Okay, fine. So where were we? Okay. And after this, I'll share this PPT to you in the group. Oh, what happened? Screen. Okay. My screen is visible to everyone? Yes, ma'am. It's visible. Visible है ना? ठीक है. Yes. Uh, चलिए. So let's start with sitemap.xml and let's see how to generate any. Okay, somebody text. Okay, so let's see how to generate a sitemap.xml. Like I explained previously, what is the meaning of sitemap.xml? Sitemap is basically a proper coded version of your whole link
or whole URLs of your website. Okay, so like I show you. So start with sitemap. Let's say sometime if your website is WordPress base, then there is a plugin for sitemap. I'll show you that also. But if your website um, is not WordPress based, then you have to upload the sitemap. If a developer gave you the backend domain access, then you can do it by yourself. If he didn't give it to you, then you have to give the sitemap file to developer. Okay. Sometime we will do some changes also in the sitemap. We'll see how we do that and how to generate that. Okay, so sorry. So the you have to type sitemap generator in Google. So this is the tool, and there are some other tool also, but this tool is pretty good. So it's very simple. What you have to do, you just have to put you have to put your website's URL link. Let's say put Prayug website URL. What is that? Okay. Let's put Prayog website's URL in this. Just check and generate the sitemap. You need to copy this, then go to the tool, paste the tool. So if you see here, more options, this tool asks include page last modification. That means what any modification or any new page that you have included in your website, you want to include that. Then there is an option called changes frequency attribute. Uh, that means if you want to specify to Google that your content is changing hourly, always, daily, weekly. Let's say you are changing your content daily or not, but you want Google to crawl your website. Although it's not fixed that if you put hourly or weekly and Google will crawl accordingly, but you can include that. So let's say I'm including daily. So I am assuming or there are probability that Google will crawl my website on the daily basis. So we just need to click on start and wait for a minute. Okay, while I'm okay, ये हो गया. So view and download. So after this, there is a file downloaded by this tool. Let's see, you want to check this. So how you can check this? You can this is a HTML document. Either you can check this on Notepad or online, but you want to edit this file. Right click this and open with Notepad. Notepad, and there is one more notepad that's called Notepad plus plus. If you have that, you can download it. If you don't have, just click on this and the whole file will automatically open. Okay, so this tool is just showing one URL of Prayug. Okay, why is this? Let me see. Should not be like this. Maybe they just HTML file does not appear to have any style information associated with documentary. Okay, they put some, I guess, restriction. Let me try with some other URL. It generate any website's URL. Oh, sorry, sitemap. Let's open this website. Okay, let's take this website example and copy this. Go to the create, put Rhina Tours.
Let's wait. Let's see if it will give the proper sitemap. Okay, wait. Okay, while I'm doing this, you can also try. I'm giving you this tool. Just put any website URL and try and generate the sitemap for that website. Okay, click on this tool or put the any website you want and try to generate the XML file or the sitemap file for that website. Start, everyone. इजी है इसको ओपन करना है देन उसके बाद आपको किसी भी वेबसाइट का यूआरएल डालना है और उसका साइट मैप उस पे जनरेट पे क्लिक करना है और वो आपको एक फाइल जनरेट करके देगा वो फाइल ओपन करिए सब लोग मतलब डाउनलोड करिए जो भी लैपटॉप से कर रहा है फोन से आई डोंट नो होगा कि नहीं लैपटॉप से होगा प्लीज एवरीवन ट्राई जब तक मेरा हो रहा है Okay, this website is pretty big, I guess. That's why it's taking so much time. Like you see, it shows the how many pages this tool is including right now. So it's crawling. Once it's done, it will give you the downloaded version of the file. Everyone try, and when you are done, let me know. It's easy, it's very simple. You just need to click on generate. Ma'am, Yes. can you use WordPress website also? Any website you can use. Okay, I done myself. Should I send the screenshot? Once let me done with this also. You Okay. can share your screen. I'll stop mine if you want to. Yes, yes, I'll हाँ share. एक सेकेंड हाँ आप से शेयर करो स्क्रीन दिखाओ Okay, sir. शो मी विकास नीचे शेयर का ऑप्शन होता है हाँ ठीक है परेश ने कर लिया है सो परेश ठीक है इट्स डन हाँ ये सही है आप इसको ना नोटपैड में खोलो परेश नोटपैड Okay, का okay. राइट डाउनलोड जो आया होगा ना उस हाँ हाँ. डाउनलोड पे जाना और डाउनलोड पे क्लिक मत कर डाउनलोड फाइल पे जाके राइट क्लिक करना और ओपन विद नोटपैड करो Okay, okay. हाँ बताइए विकास एनीवन एल्स ट्राइड जोसिका राघु अंशुमन I'm still crawling. स्टिल क्रॉलिंग हाँ इट टेक्स सम टाइम so I suggest you people to take some
normal website. So it will be like the website with lesser URLs. If you take the big website with multiple URLs, it will take some time. So if it's not completed yet, try to take some simple website or small website. Generic, any generic website. Yes. Vikas, you are sharing something to me? यस मैम। हाँ करो थोड़ा जल्दी। व्यू डिटेल पे चलिए। शेयर आप मेरे को स्क्रीन शेयर करके दिखा दो या फिर आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो। डाउनलोड एक्सएमएल सेट फाइल। हाँ शो मी योर स्क्रीन, शेयर योर स्क्रीन विद मी। नीचे शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा ना, उससे शेयर करो स्क्रीन। शेयर का ऑप्शन। हाँ। नीचे देखो चैट के पास शेयर का ऑप्शन आता है। यस यस। फोटो इमेज फाइल डॉक्यूमेंट वेब। शेयर पे क्लिक करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली वो स्क्रीन शेयर कर देगा। यस ठीक है। हाँ अब डाउनलोड वाली फाइल पे जाइए। हाँ ये हट आपने नहीं नहीं आपने आपने व्हाइट बोर्ड शेयर कर दिया डियर, स्क्रीन शेयर नहीं किया है। समझ। उसको हटाओ, उसको रिमूव करो। हाँ स्क्रीन शेयर करो, शेयर पे क्लिक करो, देन स्क्रीन का ऑप्शन आएगा, शेयर पे। स्क्रीन पे क्लिक करो। नहीं हो रहा है अच्छा तो स्क्रीनशॉट भेज दो मुझे। हाँ। ओके लेट्स मूव ऑन। किसी और ने ट्राई किया? Yeah, ma'am. हाँ दिखाइए या स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। माइन इज स्टिल लोडिंग। फाइन सो जो हमारे पास डाउनलोड हुआ था उसको ही कर लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। This was the sitemap. So let's see. I want to add it something. What something? Let's see. It include all the website URL. So I don't want to include this line that it's downloaded free. I don't want to include that in my file. I will remove that. See, whenever you are editing something in code, something like this, the one thing that you need to remember, if let's say this is the tab or the something that is opening like this, like open with these columns URL, then it should be close like this with this slash. Any just remember this whenever you are doing any editing in the code, in just case. So let's see, I want to remove this also, last modification. I want to remove this. I can remove this, save this file, then I will give this to the developer to upload in the backend. When a developer do that, a developer when upload the sitemap, you can check slash sitemap dot xml. When you do this, okay, so they don't allow to check their sitemap. So if it's your website, you can check that if it's a sitemap is open or like uploaded or not. Okay, so somebody share me the screenshots. Let me see. Okay, Jessica, it's fine. So yeah, they didn't allow to download or generate their sitemap. Maybe they put some restriction. That's why it's not showing in proper detail version. Like all the links are not visible. Okay. So because basically you need to click on view sitemap, then you have to download the file. Okay, Vikas? ओके। Okay, Anshuman, yes, Anshuman, it's accurate, it's perfect. And if let's see, if you want to remove the anything from this, you just need you can remove this something the line that is in that include create on free online setup generator. We don't want this to be on our website.
Okay, so we can remove this. If we want to increase the priority mean how much priority you are giving to that particular link. You can increase the priority by one, but in general way, we always give one priority on to the home page and 0.80 priority or 0.99 priority to the other page. Why? Just because we want Google to crawl our home page on a priority basis. If you want to increase that or change that, your senior is saying to change the priority, change any remove any particular link, that the link that is related to cookie policy, privacy policy. If you want Google not to crawl that, you can also remove that from the sitemap, or you can put that in your robot.txt file. Okay, so this Okay. is how you can generate the sitemap. Next, let's Ma'am, continue. are Then we expected to know this coding? no, no, no. We just expected to understand the how to generate the file. Okay, okay, है ना? सो वी okay. हमको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि किस चीज से क्या होता है. हमें हमें वी अभी कंपनी इज नॉट गिविंग अस दैट मच मनी टू कोड समथिंग. नहीं नहीं, वो मुझे पता है, बट जो प्रायोरिटी मेरा पता वो वी शुड। प्रायोरिटी का मतलब होता है बेसिकली हम क्रॉलर क्रॉलर को कितना किस लिंक को कितना प्रायोरिटी देना चाहते हैं. सो दैट ओके, क्रॉलर मतलब गूगल का जो क्रॉलर है वो आपके किस लिंक को पहले क्रॉल करे, किसको बाद में. ऑल्दो गूगल स्टिल डू एवरीथिंग बाय his own by their own pattern, but still there are few tricks like this. We want Google to, let's say, crawl our home page first. तो ओके, फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया होम पेज. उसके अकॉर्डिंग ये जनरेटर्स कुछ ये रेशो देते हैं, तो ये जस्ट एक जजमेंट के ऊपर है. इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने अगर उसको एक प्रायोरिटी दे दी और उसको 99 दे दी तो ऐसा ही होगा. बट ये ट्रायल एंड एरर करके एज एक्सपीरियंस है, ये चीज थोड़ी बहुत जज होती है. तो इसलिए ओके, हम एडिट के अंदर हम चाहें एडिट करके फाइल में, तो हम होम पेज की जगह किसी और पर्टिकुलर जो हमारा यूआरएल इंपॉर्टेंट है, फोकस है, उसको भी दे सकते हैं प्रायोरिटी. तो गूगल ओके, क्रॉल करेगा उस अकॉर्डिंग, ऐसा हम कहते हैं. इट्स अजम्पशन. ओके। ओके, चलिए हेलो रोबोट. मैम। यस एनीवन. हेलो। यस यस प्लीज. जी ये ब्लॉग पोस्ट का नहीं शो करता है। सबका शो करता है. ब्लॉग पोस्ट का क्या, ब्लॉगर वेबसाइट का? जी हाँ। व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट यू आर जनरेटिंग? इससे अपने वेबसाइट पे पोस्ट डाले हैं तो पोस्ट का शो नहीं कर रहा है। आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो एक बार. भाई भेज दिया हूँ फाइल। एक सेकेंड. कौन सा है आपका, आपका नाम? यूनिक जोन का नाम विकास कुमार। अच्छा विकास. विकास आपने मुझे पूरा फाइल भेज दिया क्या? ओके, रुकिए जी मैं हाँ, डाउन. स्क्रीनशॉट भी भेजा हूँ। एक सेकेंड रुकिए. स्क्रीनशॉट आपने डाउनलोड करके नहीं भेजा था ना? मेरे को डाउनलोड करके आप स्क्रीनशॉट दिखाएंगे ना. आपने डाउनलोड करके फाइल मत भेजिए, आप डाउनलोड करके भी मुझे डाउनलोड करना पड़ रहा है. ठीक है कोई बात नहीं, मैंने कर दिखा तो रहा है सारा. क्या नहीं दिखा रहा बताइए. ये आपका फाइल है जो आपने डाउनलोड करके भेजा मुझे. तो इसमें कोई जी हाँ। पर्टिकुलर आपका पेज नहीं, लिंक नहीं दिखा रहा, ये कहना चाहते हैं? हाँ। कौन सा क्या लिंक नहीं दिखा रहा आपका, बताएं. कंटेंट वाले नहीं शो कर रहा। कंटेंट वाला शो नहीं कर रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए. हाँ। आपने पब्लिश कर दिया है? जी हाँ, पब्लिश कर दिया हूँ। आप मुझे, मैं एक बार इस वेबसाइट को ओपन करती हूँ. एक काम कीजिएगा, गूगल पे जी सर्च हाँ। कीजिएगा साइट मैप जनरेटर. तो कुछ और भी वेबसाइट्स आएंगी. ट्राई टू जनरेट विथ जी सम हाँ। डिफरेंट टूल्स ऑल्सो, देर आर सो मेनी अदर. सो दिस इज योर blog website. Am I right? यस। This is your website. वेबसाइट हाँ। This is the website that you are trying. Okay, यस so यस। where is the blog section? Where is the blog page? Where is the blog page? I'm just saying. There is no blog page here. डायरेक्ट पोस्ट से पोस्ट जाकर करता हूँ। पोस्ट किया था आपने? हाँ। नहीं है यहाँ पे तो बेटा. देखिए.
कहाँ पर है पोस्ट? अगर वेबसाइट ब्लॉग कोई पोस्ट किया होता आपने तो यहाँ कहीं दिख तो रहा होता। कहाँ है? आप देखिए, आप कौन सा लिंक नहीं दिख रहा है उसके अंदर? मेरे हिसाब से तो जो यहाँ पे मुझे वेबसाइट में लिंक दिख रहे हैं वो सारे यहाँ भी दिख रहे हैं। सी, टेस्टिमोनियल का पेज, यूआरएल दिखेगा यहाँ पे, ठीक है? तो जिसमें जहां भी जी जितने हाँ। भी यूआरएल आपकी वेबसाइट पे क्रिएटेड है वो सारे जनरेट होके इसमें आएंगे। तो मेरे हिसाब से तो सारे आ रहे हैं, बाकी तो और कुछ है ही नहीं यहाँ पे। आप देखिएगा, चेक कीजिएगा वापस, आपने जो अपलोड किया है ब्लॉग वो शो हो रहा है कि नहीं वेबसाइट पे? यहाँ पे तो कहीं शो नहीं हो रहा। ओके ओके, ओके चलिए। ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, रोबोट डॉट टीएक्सटी जनरेटर्स। सो रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल आपको जरूरी नहीं है देना, वो डेवलपर कैन डू दैट बाय देयर ओन। यू जस्ट नीड टू आस्क देम टू पुट disallow on some particular any link that you want to disallow for the Google। मतलब गूगल को आप चाहते हो कि गूगल किसी पर्टिकुलर लिंक को क्रॉल ना करे और इंडेक्स तो करे ही नहीं। तो आप क्या करोगे? इंडेक्स ना करे गूगल किसी वेबसाइट को, या सॉरी किसी लिंक को आपके वेबसाइट के, तो आप उसको डिसअलाउ में डाल दोगे। कैसे? ऐसे। सी, सो आई डोंट वांट कि गूगल मेरे चेकआउट पेज को इंडेक्स करे। चेकआउट पेज मतलब जब यूजर व्हेन यूजर इज पुटिंग देयर ओन होल डिटेल एंड चेकआउट करके जो लिंक वेब यूआरएल ओपन होता है, लास्ट लास्ट पेज जो होता है, आई डोंट वांट गूगल टू इंडेक्स दैट पेज। देन कोई मेरा और प्राइवेसी रिलेटेड पेज है, मैं नहीं चाहती गूगल, रघु सही है आपका, उसको भी इंडेक्स करे कोई और ऐसा बैकएंड पे लिंक क्रिएटेड है, तो आई डोंट वांट टू इंडेक्स। या फिर ऐसा कोई मैंने ब्लॉग लिखा था या ऐसा कोई पेज था मेरा जो कि अब वैलिड नहीं है, लेट्स सी कोई डील्स का पेज था। यू हैव क्रिएटेड अ पेज और अ लैंडिंग पेज related to some deals, but now that deal is expired, but previously that page was existed on Google. Okay, now you want that page should not be exist on Google, and you want to unindex that page, or you want Google not to index that page anymore. So what you can do, you can put that URL in disallow। तो उसमें क्या होगा, आपका पेज वहां से गूगल अब क्रॉल नहीं करेगा और वो पेज इंडेक्स से हट जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से एक छोटा सा, आप फाइल जब आप यहां से रोबोट फाइल से जनरेट करते हो तो इट्स योर चॉइस, अगर आप क्या क्या उसमें डलवाना चाहते हो, किस क्या क्या चीजें डिसअबव कराना चाहते हो। बट इनिशियली अगर आप कुछ नहीं कराना चाहते तो भी आपको रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल अपलोड करनी पड़ती है बेसिक कोड के साथ। तो वो कैसे होगी? मैंने सब अलाउ क्लिक किया, मुझे कुछ अभी रिफ्यूज नहीं करना है, इसको भी डिफॉल्ट पे रखना है। यहाँ पे आपको साइट मैप डाल देना है अपना, जो भी आपने किया था। साइट मैप डॉट लेट्स सी, ये आपका एक वेबसाइट है एक्स, इसका साइट मैप है, और सब डिफॉल्ट पे रख के, और आपको क्या करेंगे, आप क्रिएट कर देंगे रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल। तो ये कि जेनेरिक रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल जनरेट होके आ जाती है, जेनेरिक, इट्स स्टेपल फॉर ऑल द वेबसाइट्स। ओके, एंड ओके ओके इसको आपको अपलोड करना है अपनी वेबसाइट पे। अगर आपका वर्डप्रेस का वेबसाइट है तो यू डोंट नीड टू अपलोड एनीथिंग, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, प्लगइन डाल सकते हैं। अब चलिए, अब साइट मैप और रोबोट दोनों की ओके। प्लगइन देख लेते हैं। तो मेरी एक वेबसाइट है, उसको ओपन करते हैं, उसका वर्डप्रेस ओपन करते हैं। देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है ये सब चीजें, टेक्निकल एसईओ वाली, अगर किसी को नहीं समझ आए, somebody has any confusion regarding these pointers, so please let me know, I'll explain you again, I'm here for that only। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है मुझसे वापस पूछ लीजिएगा, मैं वापस से बता दूंगी, बट प्लीज पूछ लीजिएगा, बिकॉज ये चीजें ऐसी हैं, अभी नहीं समझ आएंगी, बाद में प्रॉब्लम होगा। चलिए आगे चलते हैं। ओके, एंड here if you see, this is the dashboard of a website।
WordPress website. So where you can see the plugins, here you can see the plugin. You can click on install plugin, and let's see you want to install plugin for what? Sitemap. Go down, search sitemap. So here you can see the sitemap is already there installed. So if it's not installed, it will give you the option to install. How? You have to click add new plugin. So when you click on add new plugin, again you need to find out the different plugins. So in WordPress there are two type of plugin, few are paid, few are free. So most of the time free से काम हमारा हो जाता है. Free plugins are fine for SEO perspective, but there are few plugins like that are totally dedicated to SEO tool for WordPress. That plugin known as Yoast SEO. You can write it down if you want to. Yoast SEO and Rank Math SEO. So these are the two plugin of WordPress that we frequently use on WordPress website. Yoast SEO and Rank Math SEO. Okay. So sitemap search plugin for sitemap. Wait. See. Either Yoast SEO दे रहा है. I have used this sitemap plugin. You just need to click on that, activate that, it automatically install in your website. Same with robot, you just need to search for robot.txt plugin and install that plugin. Okay. So in term in if I talk about WordPress website, it's very easy. You don't need to install and sorry, you don't need to upload or anything. You just need to install the plugin. Okay. So let's continue. Okay, then the next point is page URL. So this I have already explained that you Google first crawl your URL. So in that case, you need to include a proper keyword in your URL. Okay, so let's say your keyword is related, your page is related to Thailand package. Then your keyword may be Thailand tour package or Thailand package. Whatever the keyword that with the proper good volume you should use in your URL. So जिस भी कीवर्ड का URL सॉरी जिस भी कीवर्ड का वॉल्यूम अगर अच्छा है तो आपको ऐसा ही URL अपना क्रिएट करना चाहिए, उस कीवर्ड को अपने URL में क्रिएट पुट करना चाहिए. ठीक है. ओके. सो ये सेकंड थर्ड पॉइंट हो गया. एक मिनट रुकिएगा. जस्ट वेट फॉर अ सेकंड. आई वांट टू चार्ज माय लैपटॉप. वेट मिनट. ओके. सो ब्रेड क्रम भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये भी हमारी वेबसाइट पे प्रॉपर होना चाहिए. अगर मैं इफ आई एम डूइंग एसईओ फॉर सम new client and the breadcrumb is not there and the client is related to e-commerce, then I have to tell my client to include a proper breadcrumb for a website. It is good for SEO perspective and for the user experience perspective also. So क्या मुझे कोई बता सकता है? Can anybody tell me what is the meaning of breadcrumb? तो मैम ब्रेड क्रम जो होता है उसका कैटेगरी एक टाइप का होता है, जैसे डीपर डीपर जाते हैं तो हम उसको ब्रेड क्रम की तरह उसी के में थ्रो जाते हैं. किसी भी वेबसाइट का मेरे को एग्जांपल स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं कोई भी? कि Can anybody tell me the example of this what we call breadcrumb? एक बार सब किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाओ और चेक करो कि ब्रेडक्रम उसमें है या नहीं. Open any website, e-commerce website, and tell me if you understand the meaning of breadcrumb. Then tell me if is breadcrumb is there on that website or not. Any e-commerce website उस पे easily मिल जाएगा. Sorry. Ma'am, in Flipkart.
there is breadcrumbs. Yes. So can you please show me or show everyone what is breadcrumb in where you can see the breadcrumb pattern in Flipkart? I am stopping my screen. Um, You can share your screen, Jessica. Yes, please. Share your screen and show everyone where you can see the breadcrumb. this is the breadcrumb. Yes, your screen is visible. No, 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 no. This is not breadcrumb. This is sitemap.html. Oh, okay. No, this is not breadcrumb. Open any page of Flipkart. Any internal page. Remove. Escape. Click on escape. Open any internal page. What is going on? Oh, says me to log in. Okay, open this in some different tab or in incognito mode. Open the website in incognito mode. Yes, open it. Yes. Okay. Drop मैम जो down. ऊपर हेडिंग्स है उनको ब्रेड क्रम्ब कहो। नहीं, बता रही हूँ एक बार नीचे जाओ. Go down. Click on some phone. click on some phone और description जहाँ पे add to cart का ऑप्शन आता है. ये तो ऐड ही चल रहा है अभी भी. क्लिक करो जहाँ पे अपन add to cart कर सकते हैं. Click where we can add to cart. What is going on Uh, with your Flipkart? Okay. Open Amazon. Amazon open करो. हाँ, okay. Yes, it's fine. Go back. okay. Yeah. So, Yes. Okay. Pause. So here okay. you can see there is a proper arrow, and it's mentioned home, mobile and accessories, Google Mobile, and Google Pixel. So it's showing a path how this you landed to this particular page. You can see above from Google Pixel 7a. There is a category home, mobile, Google Mobile, and Google Pixel. Jessica, you can see that? Yeah, ma'am. The path of where we came from, the Yes, the home path or the page. navigation. Okay. Yeah. सबके लिए I'll do one thing. I'll circle it. Everybody can see this. So this is what we call breadcrumb of a website. Or you can say the navigation path of a website. So it's very important to include in any or in every e-commerce website, or if you have a very lengthy website, or if you don't have a good that much lengthy website, still if you include a proper breadcrumb of your website, it's good according to the Google also, because when Google is crawling for this particular page, then in the chances of Google will crawl your home page, your this page, your this page, your this page, and your this page, because you are showing to Google that my this page of mine is come with this path navigation or this site navigation. Okay, so it's good for user experience perspective, and it's good for Google crawling or SEO perspective also. So this is called breadcrumb. Understand? Yes, ma'am. Yes. Okay, you can stop the screen now. Okay. अंशुमन ने भेजा. अंशुमन, आप इंटरनल पेज में ओपन करोगे तब आपको दिख जाएगा. मैम मैंने किया था, वो आगे मैं गया तो नहीं, आई कुडंट सी इट आफ्टर यू एक्सप्लेन। उसके बाद में ऐसे थोड़ा एक कैटेगरी कोई में, सा फिर भी ऐसा पेज सब खोल लो कैटेगरी में जहाँ पे explore ऐड टू कार्ड का ऑप्शन आता है. अच्छा, ओके ओके, ठीक है, ऐड टू वहां दिख. कार्ट तक नहीं गया। कोई सा भी पेज जहाँ ऐड टू कार्ड का ऑप्शन आ रहा है वहां दिख जाएगा पाथ. ओके Everybody check that on any website. Every single person check that on any website and type yes. If you type yes, then I'll understand that you check that by yourself.
check with any website where you can see the breadcrumb. I gave you 2 minutes. Everyone try. Check this. I'll come back. And type yes in the chat box if you are done. गौतम गौतम एक बार आना. Color change in my urine. I feel it's a little red. Golden soda. Hello. Yes. Okay. So let's move on. सबने ट्राई कर लिया. Okay, ठीक है. Fine. So let's come to the next point. So sitemap.html next. So that sitemap.html basically that there are few websites जो आपको नीचे ऑप्शन देती हैं एज अ यूजर टू चेक द होल पैटर्न ऑफ योर वेब ऑफ दैट वेबसाइट कि कितने यूआरएल हैं कितने उसमें है. जैसे अभी जोसिका ने अभी शो किया था. सो वो होता है sitemap.html. It's for the user only. It's not for the Google basically. It's for the user only. So if your website include thousands of link, then you should include sitemap.html in your website. नीचे sitemap.html का ऑप्शन आता है फुटर में. ओके. एसएसएल सर्टिफिकेशन सबको पता ही है कि हमको एक सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है. एसएसएल सर्टिफिकेशन कहते हैं उसको जब हमारी वेबसाइट में HTTPS जो लग जाता है सिक्योरिटी के लिए. दैट्स कॉल्ड एसएसएल सर्टिफिकेशन. अगर वो नहीं है आपकी वेबसाइट सिर्फ HTTP की है तो गूगल उसको अब क्रॉल नहीं करता है. ठीक है. तो आपकी वेबसाइट में HTTPS होना या फिर सिक्योरिटी या एसएसएल सर्टिफिकेट होना इंपॉर्टेंट है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड इन योर वेबसाइट. ओके. ये हमने इंक्लूड कर ही लिया था. व्हाट इज कोर वेब वाइटल, हाउ टू चेक द स्पीड ऑफ द वेबसाइट. this we already included. Okay. How much time we have? We have 5 minutes, so we will do one thing. Okay, let's do one thing. Okay, we include this point structure markup in the next class because it's very lengthy. So let's discuss what is canonical tag. Okay, so what is canonical tag? Canonical tag, like I already explained in previous class a little bit, this is basically a tag or a code that you need to put in every page. Why? Because sometime, let's say this is your page, Bali, Singapore honeymoon package, and in the backend, you have a similar page like this. But in SEO, you are targeting this particular page. So sometime Google got confused that which page Google should give the ranking. Okay, so that remove that confusion, you should ask your developer to include this particular code. Okay, REL canonical, and then that landing page link that you want to put the canonical. So basically, you need to put every link in this, and you have to ask your developer to include this canonical tag in your website. So it helped to reduce the duplicacy of the URL so that Google will not get confused and Google will give the ranking to the URL that you are focusing in SEO on the keyword basis. Done?
301, 302, 404 हमने इंक्लूड कर ही लिया है। 404 में बस ये चीज ध्यान रखनी जरूरी है हमें। what we need to focus in 404 that first, yes, 404 पेज होना जरूरी है। if in case user landed on some particular page that does not exist on a website, then it shows 404 error, but a proper header of your website. If it just shows random, just 404 error, it should not be like that. You should have a proper format of 404 with your website's heading, header and footer, so that you if user landed on some page that is 404, the user can go back to the home page or some other page. तो अगर 404 आपको 404 पहली बात तो डालना जरूरी है। ठीक है, तो आपको डेवलपर को बोलना पड़ेगा 404 लगाओ वेबसाइट पे। अगर नहीं है तो आपको लगवाना होगा, बोलना पड़ेगा। अगर उसने लगा भी दिया है तो वो भी प्रॉपर हेडिंग एंड फुटर के साथ होना चाहिए, लाइक आई शो यू अगेन। सो लेट्स से दिस इज द वेबसाइट एंड स्लैश कुछ रैंडम पेज यूजर ने ओपन कर लिया गलती से। तो जैसे यहाँ पर आ रहा है, वेबसाइट का नेम आ रहा है एंड 404 लिखा हुआ आ रहा है, तो प्रॉपर डिजाइंड 404 पेज है। तो ऐसे ही हमारा 404 पेज होना चाहिए। कैसे नहीं होना चाहिए? ऐसे नहीं होना चाहिए। Should not be like this, it should be like this. Okay, so this is 404 error, or you can say page not found error. 404 error or page not found error. Now W3 validator. Okay, we'll do this also today. Then we'll include open graph and sitemap markup in next class, because these 2 points are similar. It's generative and it's little bit code basis. So okay, so ये क्या है? ये भी एक तरह का टूल है जो हमें हेल्प करता है वेबसाइट के माइनर और सीएसएस या लेआउट एरर्स को पता करने के लिए। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द बेसिक एचटीएमएल एरर्स. But the thing is, the web developer, if a developer, your website developer is good, the errors, the chances of error may be very less, but sometimes it's not like that. So what we have to do, we have to check our link or the landing page link in this tool. It's called W3C validator. What it help? It help to check the HTML codes, CSS codes, basically your design related errors, your HTML related errors. Okay, so so see, it shows only 12 basic errors, so it's not that bad. See, these are the error related to design, text, width, height. So you just need to give this report to the developer and ask them to resolve these errors. So these are not that much. It's just 10 error in the home page. So let's check some different website if they have an error or not. Copy, paste, check. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, I think it's stuck with the PPT Okay. screen. Sorry. Okay, sorry. Okay, maybe my screen is. Okay, give me a second. Sorry, now it's visible? Okay, let me explain it again. So let's take a URL of this website first. Put this in this particular tool. Click on check. So basically this tool shows you the basic errors in HTML code or in design level code. Let's see your image, your website, your landing page pattern. Okay, see I'll show you. If there is any error in the alignment, in the width, height. Okay, so it shows errors like this. So in this page, we just have 12 errors. It's not that much. इतना तो basically हो ही जाते हैं. Perfect तो कोई भी, there is no website that is perfect. Let's check this website. What happened? Okay, copy, paste, check.
let's see what it shows. See, it shows few errors, few warnings, and there are so many errors and warnings. So this happen when the website have too much errors. See, where I just put the homepage link and so many design level error it shows. You can see there are so many basic errors that we don't understand, but when we give it to the developer, the developer will understand. So this error, it shows a proper line or a code where the error is there. Let's see, there is an error in image, this image. So it shows that um your what is missing, element is missing. So developer will understand as we just need to give this report to the developer. Okay, let's try puts any of the website link in this tool. Sorry. Try. Everyone, open this link. I give it to you in the chat and put some any website URL in that and check. See, there are few basic errors that developer understand that okay, these error doesn't matter that much, but try to resolve as much error that possible. If there are less error, then your website speed matter, then your website core vitals are matter. So this is basically core vital related uh, tester or tool, you can say, where you can check your content, your images. Image is also part of a content, so it's accurate or not, your website design is accurate or not. So it give you errors related to elements and everything. So try to use this tool, put any of the website you want and check. This is the last topic for today. Excuse me, ma'am. Yes, Ma'am, can I share you yes, my yes. Show screen? me the screenshot. Okay, Jessica shared me. Yes, Jessica, it's fine. So, did like scroll down and check is there any it shows any error or not. Info is fine. If it shows any error or not, check that. Okay. Yes, Yes, ma'am. It shows. oh, it shows the error. Fine. So yes, that's all. You understand this. What you need to do, you just need to give this tool to the developer or the file to the developer, screenshot, whatever, and they will resolve that. You just have but why we use this tool to understand that do we have errors on the website. Sometime happen, what happened, no, you have so many you did so much on your website but still the speed is not good. Okay, the core vitals are not good, mobile optimization is not good, and but we don't understand what is going on because we don't have that much deeper understanding of these code and everything. So these tools help us to evaluate or to do the audit of these websites. Okay, so yes, that's all for today and we'll continue in the next class now. Thank you so much. So चलिए today you don't have any assignments, enjoy, and चलिए we'll meet in the next class. मैम, Yes, yes, please. मुझे एक जानना, जैसे हमको असाइनमेंट दिया जाता है जी
तो उसका कोई डिटेल्स होता तो हम उसको बना के अपना प्रोफाइल बना लेते, ताकि हमको इन फ्यूचर काम में आएगा। अभी से वो रख लेंगे तो अच्छा होगा। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि कौन कौन सा असाइनमेंट है, तो आप मैं उसका डिटेल दे दूं ताकि आप उसको एक जगह रख लो। हाँ, जैसे मैं हमको दिया गया है, जैसे कीवर्ड रिसर्च का एक बनाया था हम लोग, हाँ हाँ हाँ। उस टाइप का अच्छा, जितना भी है सारे, ताकि हमको इन फ्यूचर काम आएगा प्रेजेंट करने के लिए। कि आपने क्या वर्क किया। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ। ठीक है, आई हैव टू चेक कि क्या क्या चीजें दी थी। ठीक है। देन हाँ आई हाँ। विल शेयर यू इन द डॉक्यूमेंट, आप उसको फिर बना के और एक जगह रिकॉर्ड करके रख लेना। ठीक ठीक। ठीक है, मैं देखती Hello, हूँ। हाँ, यस excuse me, प्लीज। ma'am. हाँ जी, बोलो। Ma'am, can you tell me how we can revise these topics थ्रू द so that रिकॉर्डिंग। through the recording or anywhere else? थ्रू रिकॉर्डिंग एंड आई विल शेयर द पीपीटी टुडे, आई एम शेयरिंग राइट अवे। Okay, ma'am. ठीक है ना। Raghu, तो Raghu, क्या करना। recordings will be shared after the editing. Mostly it will be shared by tomorrow. Okay? हाँ, Okay, ma'am. Sir. तो करना क्या, लेट्स सी, मैंने पीपीटी शेयर किया एंड उसमें जो भी पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए, मैंने टेक्निकल एसईओ तक 95% एक्सप्लेन कर दिया, दो तीन टॉपिक बचे हैं। सो क्या करना, उस पे जान सब सारे पॉइंट्स को एक एक करके समझना और क्रॉस चेक करते जाना रिकॉर्डिंग से। ठीक है। और फिर भी नहीं समझ आता तो कुछ कुछ पॉइंट्स को गूगल करके भी देख लेना, कभी कभी उससे भी थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। बाकी मैंने पीपीटी ग्रुप में भी शेयर कर दी है, तो अभी Okay, सिर्फ ma'am. टेक्निकल एसईओ तक ही समझना, उसके आगे जो पॉइंट्स हैं उन पे ध्यान मत देना। Okay, ma'am. Thank टेक्निकल you. एसईओ तक मैंने कवर कर लिया है। आज टेक्निकल एसईओ का मतलब नेक्स्ट क्लास में लास्ट होगा टॉपिक, देन ये कंप्लीट हो जाएगा होपफुली। देन हम ऑफ पेज पे चलेंगे। ठीक है। Okay, ma'am. तो आप Okay. ऐसे पीपीटी एक बार ओवरव्यू कर लो और रिकॉर्डिंग देख लो। Okay, ma'am. Thank you. ठीक, ओके, चलिए, थैंक यू, बाय।